सादर प्रणाम दीदी जी, भैया जी, नमस्ते भैया जी। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ऑफिस में हैं फिर भी टाइम निकाल कर मेरा सपोर्ट करने आ जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ठीक है दीदी, ठीक है। राम राम भैया जी। नमस्ते चौबे भैया जी, नमस्ते, बाय बाय भैया जी। राम राम भैया जी, राम राम। हर हर महादेव भैया जी, हर हर महादेव। दीदी जी हर हर महादेव। ममता दीदी हर हर महादेव। भैया जी बाय बाय, भैया जी हर हर महादेव। धन्यवाद दीदी जी। हाँ दीदी, इंडियन वाले से आ रहा है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। समझ गई, पहले नहीं समझी दीदी, अब समझ गई कि दोनों मोबाइल लगा के रखी हैं आप। इंडियन वाले से कमेंट, हाँ दीदी आ रहा है, दोनों से आ रहा है। इस पर भी ब्लू दे दूं क्या? खुश रहो मेरी प्यारी बहन, सदा सुहागन रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसती मुस्कुराती रहो बहन। ये देखो कुछ बार बार में बारिश हो रही है, बारिश बारिश हो रही है, कपड़ा होगा। दे दी हूँ दीदी, दे दी हूँ। हाँ कपड़ा मैं हटा ली थी, लेकिन बारिश हो रही तो मैं सोची हो सकता है कुछ भूल गई हूँ। हाँ दीदी, दोनों से जल्दी हो जाता है। कहाँ पहुँचा? बहुत तेज बारिश हो रही है। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। इधर बहुत तगड़ी बारिश होती है। इधर बारिश होती है। तो जहाँ हुआ वो रुक गया। इधर ना हो। तो जहाँ हुआ वो रुक गया, बारिश भीगे ना। बारिश बंद हो तो देखना। बारिश हो रहा है। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। मीनू बहन धन्यवाद, दीदी जी धन्यवाद, भैया जी धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद। मेरे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है और मेरा लड़का डीबीटी गया है, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। हाँ हेलो, मैं कहाँ गए? देखो पानी भीग ज्यादा देख रहा है, नाला वाला में पानी भरा रहा है। तो जहाँ तक बारिश न हो तो वहाँ तक चलाओ, जहाँ से बारिश दिखाए वही जहाँ कहीं रुक गई है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव शंभू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको मेरी लाइव में स्वागत है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। आपकी लाइक दिख रही है बहन, 6 लाइक हो गया है। धन्यवाद मीनू बहन, धन्यवाद ममता दीदी, धन्यवाद सुषमु सिस्टर, धन्यवाद। हाँ बिटिया मुझे दिख रहा है तुम्हारे कमेंट्स बोलने से पहले ही मैं बोल दी थी तुम्हारा लाइक आ गया है। सादर प्रणाम दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बिटिया कैसे आप सपोर्ट की हूँ तुमको, मेरी जितनी बहनें हैं मैं सबको कई बार कई उससे सपोर्ट की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सभी बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता दीदी को धन्यवाद, मीनू बहन को धन्यवाद, सैल बहन को धन्यवाद, विनोद भैया को धन्यवाद। वो कमेंट नहीं छोड़े होंगे, केवल वीडियो आज करके छोड़ देते हैं। बहुत वही ठीक है बिटिया, उतना भी ठीक है। कमेंट की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लाइक कर दिया करें और वॉच कर लिया करें। कमेंट तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ मैंने आपका वीडियो सुना। लाइक और वाचिंग की ज्यादा वैल्यू होती है। कैसा लगा पापा को, अच्छा लगा कि नहीं मेरा वीडियो? मेरे यहाँ लाइट भी कट गई। थैंक यू बिटिया रानी, पापा जी को भी थैंक यू।
ठीक ठीक बिटिया, उस नए वाले को करना, नए वाले पर सपोर्ट करना बिटिया। उससे कमेंट करूंगी तुम्हारे उस पर, तो उस पर भी सपोर्ट कर देना। है तो तुम्हारे पास है वो वाला भी। ठीक है बिटिया रानी। ठीक ठीक ठीक, शादी वाले तो बहुत सारे, मैं शादी वाले गीत डाली हूँ। मैं नवंबर के पहले ही दीपावली नवरात्रि से ही शादी वाले गीत डालना शुरू कर दूंगी। ठीक है बिटिया रानी। मेरे यहाँ लाइट बहुत परेशान कर रही है, बार बार आना जाना लगा के रखी है। बारिश होना शुरू हुई नहीं कि लाइट तुरंत कट जाती है। ये देखो इधर एक अंदर जो वहाँ बाहर पड़ी है क्या? क्या? इधर देखो, इधर यहाँ कपड़ा है, इधर देखो अंदर जो है बड़ा ब्लू ब्लू कलर वाला। अरे देख लो, गीला हो जाएगा। कल भी वो नीचे गिर गया, तो गीला हो गया, तो मैं ही वहाँ डाली थी और हटाने को भूल गई। हटा लीजिए। इधर मैं बिटिया लाइव के चक्कर में तुम्हारे वीडियो पे बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है। पूरा दिन तो बिजी रहती हूँ। ठीक है बिटिया। ठीक बिटिया रानी। देखो मेरे में जो है कमेंट आ रहा है, 4 4 कमेंट आ रहा है और वाचिंग 0 शो कर रही है। यही सबकी लाइफ में यही होता है। दीदी जी हमारी बड़ी बड़ी इमोजी के साथ हंस रही हैं। अब फिर लाइट आ गई मेरे।
मैं ये बोल रही थी कि मेरे मन नवंबर में शादी है तो सारे लोग आएंगे। हाँ बिटिया, मैं पढ़ी थी, मैं पढ़ी और समझी भी। हाँ हाँ, वो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सही रहेगा बिटिया वो। मोबाइल भीग का हुई ना, जूता भीग का हुई ना। मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ रही हूँ बिटिया, ये तभी तो बोली थी कि मैं जो है नवरात्रि से, कुंवार वाली नवरात्र जो होती है, नवरात्रि से जो है शादी वाले गीत फिर डालना शुरू करूंगी। और पिछले साल भी मैं नवरात्रि से शादी के गीत डालना शुरू की थी। नवरात्रि के बाद देखो बहुत सारे विवाह वाले गीत हैं पड़े हैं। बहुत टेंशन में रहे हैं और तो पूरा बढ़िया है। जय माता दी ज्योति जी, जय माता दी। अरे पूरा बहुत टेंशन और पूरा बढ़िया है ना। भैया पेपर खराब हुआ, भैया ठीक है। सहेल सिस्टर धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद, रमो दीदी धन्यवाद, ज्योति। नहीं क्यों हुआ है ना 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 देखा भी ना ना ही हुआ। जैसे आपसे बात है तो बार ना, हाँ वैसे कहीं से तो बार बात नहीं है ना ना हुआ। धन्यवाद मेरी सभी बहनों को, धन्यवाद मेरी सभी बहनों को, धन्यवाद। देख क्या है उसके साथ मैं कोनो बातचीत बात ऐसे हाँ ममता दीदी धन्यवाद, रमो दीदी धन्यवाद, सुशंभु सिस्टर धन्यवाद, मेरी सभी बहनों को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ज्योति सिस्टर धन्यवाद, मीनू सिस्टर धन्यवाद। मीनू बहन आपका कमेंट नहीं आ रहा है, अगर लाइव में हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर दो। अचानक बीच वाला हो गया बहुत
मेरी सभी बहनों को धन्यवाद। शंभू सिस्टर धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद, रमो दीदी धन्यवाद, मीनू बहन धन्यवाद। ज्योति ज्योति थैंक यू सुशंभू सिस्टर, थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू रमो दीदी, थैंक यू मीनू बहन, थैंक यू। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति सिस्टर थैंक यू। आटा खान ले वो धन्यवाद अंशिका बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी लाइव में बहन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी लाइव में आए बहन। धन्यवाद मेरी सभी बहनों को, धन्यवाद। ठीक है, कर लो बिटिया रानी, काम कर लो। मैं तो ऐसे भी काम करने को नहीं मना करती हूँ पूनम दीदी। ठीक है, बना लो बहन, बना लो, बना लो, खाना बना लो। हाँ ठीक है बहन, ठीक है, बना लो इस टाइम खाना। मैं भी खाना बना रही हूँ, अभी मेरा हो नहीं पाया है।
कब? ममता दीदी धन्यवाद, शिव शंभू सिस्टर धन्यवाद, बाहर आ गया खटरा अंशिका सिस्टर धन्यवाद, रमो दीदी धन्यवाद, ज्योति सिस्टर धन्यवाद, भावना सिस्टर धन्यवाद। भाई रमो दीदी काम कर लो दीदी, मुझे पता है कि आप हो। हेलो ममता दीदी आज लेट हो गया। अच्छा, काहे को लेट हो गया बहन? मीनू बहन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ममता दीदी धन्यवाद, रमो दीदी धन्यवाद, मीनू बहन धन्यवाद, ज्योति बहन धन्यवाद, रमो दीदी धन्यवाद, मेरी सभी बहनों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। किताब उठाया पढ़ा
हाँ बुआ बहुत प्रणाम। बहुत हाँ हाँ बुआ। धन्यवाद पूजा बिटिया, धन्यवाद मेरी लाइव में आई बिटिया रानी, दिल से धन्यवाद। मैंने बुआ आनंद दादा फोन किया हाँ करके। ममता दीदी धन्यवाद, पूजा बिटिया धन्यवाद, मीनू बहन धन्यवाद, ज्योति बहन धन्यवाद। 8 लोगों की वॉचिंग चल रही है, 8 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से अरे आभार नाम प्रकट बोला करती सभी सही लोगों को। ममता दीदी इंडियन वाले से कमेंट करिए, ममता दीदी इंडियन वाले से करिए। पूजा बिटिया हमारी खूब ढेर सारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। हाँ दीदी ठीक ठीक दीदी। पूजा बिटिया हमारी खूब बड़ी बड़ी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। मीनू बहन भी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लाइफ में स्वागत है मेरी गुंजन प्यारी बहन। यहाँ बारिश हो रही है, मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए मैं म्यूट कर करके बात कर रही हूँ आप सबसे।
दीदी जी सादर प्रणाम दीदी जी। ब्लू दे रही हूँ दीदी। दोनों पर ब्लू दे दी हूँ दीदी। गुंजन बहन बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा बिटिया रानी बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। रम्मो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी, वो तो उसमें इंदु मिश्रा लिखा ही है। आपका नाम लिखा है दीदी, आप ना बताती तब भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव गुंजन बहन। पूजा बिटिया हर हर महादेव। रमो दीदी हर हर महादेव। पूजा बिटिया हमारी खूब बड़ी बड़ी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। गुंजन बहन हमारी खूब हंस रही हैं। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक, कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बिटिया, दो दो आईडी से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद बिटिया रानी। दो दो आईडी से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया रानी। धन्यवाद। रमो दीदी धन्यवाद। पूजा बिटिया धन्यवाद। शिव शंभू सिस्टर धन्यवाद। इंदु दीदी धन्यवाद। ममता दीदी धन्यवाद। ज्योति सिस्टर धन्यवाद। मीनू बहन धन्यवाद। 7 लोगों की वाचिंग चल रही है। शोभा सावित्री गीतमाला मेरी गुंजन प्यारी धन्यवाद। हर हर महादेव गुंजन प्यारी, हर हर महादेव। रमो दीदी हमारी खूब बड़ी बड़ी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। पूजा बिटिया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुंजन बहन हर हर महादेव। पूजा बिटिया हर हर महादेव। इंदु दीदी हर हर महादेव। रमो दीदी हर हर महादेव। मीनू बहन हर हर महादेव। ज्योति बहन हर हर महादेव। धन्यवाद पूजा बहन, धन्यवाद। धन्यवाद मेरी सभी बहनों को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु दीदी धन्यवाद। रमो दीदी धन्यवाद। पूजा सिस्टर धन्यवाद। काजल बहन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद काजल बहन। हाँ बहन, लाइक डन हो गया है। काजल बहन मैं आज आपकी लाइव में नहीं आई, थोड़ा बिजी थी। लाइव में आने के समय जैसे मोबाइल उठाने से पहले ही फोन आ गया था, फोन पर बिजी हो गई, इसी वजह से नहीं आई। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा काजल। जय श्री राधे कृष्णा। पूजा बिटिया जय श्री राधे कृष्णा। इंदु दीदी जय श्री राधे कृष्णा। काजल बहन जय श्री राधे कृष्णा। रमो दीदी जय श्री राधे कृष्णा। ज्योति सिस्टर राम राम। राधे राधे ज्योति। मीनू बहन राधे राधे। ठीक 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 बहन, ठीक है ठीक है ठीक है, काम कर लो बहन। वैसे भी मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा देर भैया मोबाइल में नहीं देखना चाहिए, ऑन करके रख दो, नहीं तो आंख में दिक्कत होने लगेगी। मैं सभी बहनों को ही बोलती हूँ, आंख अगर मोबाइल में ज्यादा अगर आंख लगाओगी तो आंख में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। दिक्कत से, अगर आंख की दिक्कत से बचना है तो आराम से ऑन करके रख दो, एक दूसरे पर भरोसा करो बस। भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं है, जहाँ विश्वास है वहीं विश्वास है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। काजल सिस्टर देखो, वो पूछ रही हैं शोभा सावित्री गीत माला। गुंजन सिस्टर पूछ रही हैं कृषि भैया लाइव नहीं किए थे क्या। हैप्पी तीज, हैप्पी तीज बहन। काजल बहन उधर पश्चिम में आपकी तरफ ये वाली हरियाली तीज मनाई जाती है, और इधर हमारे यहाँ पूरब में पूर्वांचल की तरफ इधर वो मनाई जाती है भादो वाली तीज, उसको हरितालिका तीज बोलते हैं। हरतालिका तीज पर हमारे यहाँ औरतें सब पूरा निर्जला व्रत रहेंगी, पानी भी नहीं पिएंगी पूरा दिन, और दिन में 3 बार स्नान करेंगी और रात में जो है 3 बार पूजा करेंगी शंकर जी का। मिट्टी के शंकर जी बनाएंगी सब अपने अपने घर में औरतें, और उसका पूजा करेंगी। फिर सुबह ले जाएंगी गंगा जी में, दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में, चौथ वाले दिन, जिस दिन रहता है गणेश चतुर्थी की स्थापना होती है, उस दिन गंगा जी में जाके उसका विसर्जन करेंगी। पूरी रात गाना बजाना करेंगी, शिव जी के भजन गाएंगी।
वही तो मैं बोल रही हूँ कि पूरा दिन निर्जल व्रत रहती हैं पूजा बिटिया। यही तो बोल रही हूँ कि हमारे इधर पूर्वांचल में, इलाहाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, मतलब इस एरिया में, यूपी के पूर्वी इलाके में ये व्रत रहता है। और पश्चिम में जो है ये वाली तीज रहते हैं, हरियाली तीज। पश्चिम में हरियाली तीज मनाई जाती है और अपने उधर हरतालिका तीज मनाई जाती है। पूरा दिन पूरी रात निर्जल रहते हैं। दूसरे दिन जब वो कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं मूर्ति को, उसके बाद ही तो पानी पिया जाता है। यही बोल रही हूँ पूजा बिटिया, मैं भी जो तुम बता रही हो। हाँ बिटिया, अरे बिटिया कुछ लोग तो फल भी खा लेते हैं। कुछ लोग क्या, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बहन, आपका स्वागत है। वेलकम माय सिस्टर, मेरी लाइव में आपका स्वागत है। कुछ लोगों की क्या बात है, मेरी खुद की देवरानी भैया, मैं तो पहले लखनऊ में रहती थी, उसके बाद जब गांव गई तो वहां जब मेरी पहली तीज पड़ी तो मेरी देवरानी पूरा फल वल मंगाई थी, सेब के लौला। तो मैं सोची कि भगवान को चढ़ाने के लिए है और चढ़ा तो मैं उनसे पूछी ये क्या करूं, कहे खाने के लिए। हमके कहा इसमें फल खाया जाता है, लेकिन अब वो भी छोड़ दी हैं। उनके मायके में शायद खाया जाता होगा, जैसा भी हो मुझे जानकारी नहीं है। तो पहले खाती थी, और जब मैं और मेरी सबसे छोटी वाली देवरानी, वो हम दोनों बिना पानी के रहते हैं, तब वो भी वैसे रहने लगी, हम ही दोनों की तरह। राधे राधे काजल सिस्टर, राधे राधे। ऐसे जब कमेंट आता रहता है तब बात करने में अच्छा लगता है। मेरे लड़के का पेपर चल रहा है और बारिश हो रही है, इसी वजह से जब मैं अभी तक मैं कमरे में थी, अभी बारिश निकली तो मैं बाहर आके बैठ के तो बात कर रही हूँ। जब कमरे में रहती हूँ तो म्यूट कर देती हूँ, उसको पढ़ाई करने में दिक्कत होती है जब मैं बोलती रहती हूँ तो। हाँ तो तुम भी तो इधर की हो ना बहन, यही रूल ही यही है। निर्जल व्रत रहते हैं, पूरी रात गाना बजाना, वही शंकर जी का जो है भजन करते हैं, पूरी रात रात्रि जागरण होता है। रात में 3 बार पूजा होती है। एक बार शाम को सब लोग करते हैं, उसके बाद फिर 12 बजे रात में कर लेते हैं, 12 बजे से पहले ही। और फिर सुबह 4 बजे पूजा करके फिर उसको ले जाके वहाँ गंगा जी, हमारा घर गंगा गंगा जी किनारे ना, सिंगवेरपुर के पास। तो मेरे यहाँ सब लोग गंगा जी जाते हैं, तो सुबह गंगा जी में विसर्जन करके गंगा स्नान करके फिर वहां से आते हैं। तो घर में जो है लाल चीजें बना खाते हैं, जैसे दाल वाला पराठा हुआ, और चना वना छौंक के खाते हैं। खीरा भी खाया जाता है उसमें। व्रत खीरा से है और चने से ही तोड़ते हैं। मैं ये हरियाली तीज पहले मैं नहीं जानती थी, ये तो ये मोबाइल और टीवी से ही हरियाली तीज जानी हूँ। मोबाइल वाला फैशन जब नहीं था, इससे पहले ही टीवी में ही हरियाली तीज देख कर जानी थी। हमारे इधर हरियाली तीज की प्रथा नहीं है। लेकिन व्रत दोनों सेम ही हैं, जैसे उसकी पूजा होती है वैसे इसमें भी देखते हैं सब औरतें। टीवी में देखी हूँ, रियल में कहीं नहीं देखी हूँ हरियाली तीज की पूजा। अच्छा तुम्हारे यहाँ रहते हैं? अच्छा अच्छा बेटी, बेटी आप क्या हुआ ना, जैसे अब जो लोग बाहर निकल गए हैं, शहर में जो निकल गए हैं, अब जैसे छठ पूजा भी हर जगह मनाई जाने लगी। आज के 15 साल पहले मैं छठ पूजा भी नहीं जानती थी।
और अब तो मेरे यहाँ खुद ही जो है गंगा जी के किनारे मैं देखती हूँ, जब गंगा स्नान करने जाती हूँ तो छठ पूजा होती है सिंहबेरपुर में भी। पूरे प्रयागराज में, सिंहबेरपुर में हर जगह छठ पूजा होती है। तो अब तो लोग जो है जैसे घर से बाहर निकले तो एक दूसरे को देख देख कर रहने लग गए हैं। आप जहाँ से हो बहन वहीं से मैं भी हूँ, यूपी प्रयागराज। मंजू बहन, जहाँ तुम्हारा मायका है वहीं मेरा ससुराल है। प्रयागराज में रामायण पढ़ी हो? रामायण में रामचरितमानस में जो है केवट जी का वर्णन आता है। केवट जी का वर्णन आता है जहाँ भगवान राम अपना पैर धुलाए थे, श्रृंगबेरपुर। वही मेरा घर है, निज निवास मेरा वही है श्रृंगबेरपुर के पास। रामचरितमानस में वर्णन आता है श्रृंगबेरपुर का। अब चौपाई मुझे नहीं याद है। चौपाई नहीं याद है, गाना एक आध लाइन बता सकती हूँ। आते हैं अवध से हम केवट नैया को झट तैयार करो, हैं साथ लखड़ो प्रिय सीता मत देर करो, झट पार करो, बोला केवट इन पग धूलों से प्रभु शिला बनी पत्थर नारी, पग धूल पड़ा जो मेरी नैया प्रभु फलित वृक्ष बन जाएगी, बिन धोए पग ना पार करो चाहे जितना तकरार करो, बिन धोए पग ना पार करो चाहे जितना तकरार करो, सुने प्रेम अनोखा केवट का हंस दिए लखड़ सीता, रघुबर मनसा की आशा पूर्ण करो मत इसमें सोच विचार करो, मनसा की आशा पूर्ण करो मत इसमें सोच विचार करो। ये उसी जगह का वर्णन है इस वाले गीत में। मनसा की आशा पूर्ण करो मत इसमें सोच विचार करो, सुने प्रेम अनोखा केवट का हंस दिए लखड़ सीता, रघुबर मनसा की आशा पूर्ण करो मत इसमें सोच विचार करो। हाँ काजल बहन, ये वर्णन वही जब भगवान राम जाते हैं केवट, वही पैर धुलने के लिए उनसे अर्ज करता है। पहले प्रभु श्री राम कहते हैं कि आते हैं अवध से हम केवट नैया को झट तैयार करो, है साथ लखन और प्रिय सीता मत देर करो झट पार करो। तब केवट उनसे अर्ज करता है, प्रभु पहले मैं तुम्हारी नैया धुलूंगा, नहीं तो आपके पग के धूल से एक शिला मतलब पत्थर जब गौतम जी की नारी बन गई तो आपके अगर चरणों की धूल मेरी नाव पे पड़ेगा तो ये फलित वृक्ष मतलब एक फलने वाला वृक्ष बन जाएगी। तब भगवान कहते हैं कि मनसा की आशा पूर्ण करो मत इसमें सोच विचार करो। पगी धूल पड़ा जो मेरी नैया प्रभु फलित वृक्ष बन जाएगी,
मनसा की आशा पूर्ण करो, मत इसमें सोच विचार करो, सुने प्रेम अनोखा केवट का हंस दिए लखड़ सितार, घुबर सुने प्रेम अनोखा केवट का हंस दिए लखड़ सितार, घुबर। धन्यवाद मेरी सभी बहनों को, धन्यवाद मंजू सिस्टर, धन्यवाद इंदु सिस्टर, धन्यवाद काजल सिस्टर, धन्यवाद गुंजन सिस्टर, धन्यवाद ज्योति सिस्टर, धन्यवाद मेरी सभी बहनों को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा बिटिया चली गई क्या? मैं सिंगबेर का वर्णन ही बता स्कोर का वर्णन ही बता रही थी। हमको लगता है गुंजन बहन और बहन, अब मैं थोड़ा म्यूट करने जा रही हूँ। आप लोग आपस में बात करती रहिए, मैं बीच बीच में बात कर लूंगी। मेरी सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आपस में बात करते रहिए, मैं बीच बीच में आपसे बात करती रहूंगी। अभी थोड़ी देर के लिए म्यूट की हूँ। जाना नहीं मेरी प्यारी बहनों, नहीं तो सोचो मैं चली गई तो आप लोग भी चली जाओ। मैं बीच बीच में बात करती रहूंगी। चाचा जी सादर प्रणाम। चाचा जी मैं थोड़ा बिजी हूँ चाचा जी, अभी जाना नहीं चाचा जी, आप कमेंट करिए, मैं देखती रहूंगी कमेंट। और आप कैसे हो चाचा जी? आपका स्वागत है हमारी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आप रोज आ जाते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे ऊपर। चाचा जी आप चले गए क्या? आपका कमेंट नहीं आ रहा, एक ही कमेंट आया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रही हूँ, आप सबका कमेंट देख रही हूँ, थोड़ा कुछ काम कर रही हूँ।
इंदु दीदी धन्यवाद, काजल बहन धन्यवाद, धन्यवाद काजल बहन, धन्यवाद इंदु बहन, धन्यवाद मीनू बहन, धन्यवाद ज्योति बहन, धन्यवाद गुंजन बहन, और मेरे जो भी भाई बहन हो सभी को धन्यवाद, और जो भी भाई बहन मेरी लाइव में हो सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा शर्मा दीदी सादर प्रणाम, दीदी जी शर्मा दीदी जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आप अपना आशीर्वाद देने के लिए आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। शर्मा दीदी लाइक डन कर दो, शर्मा दीदी लाइक डन कर दो, आपका लाइक अभी नहीं मिला है दीदी जी। सादर प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने इतना कीमती समय दिया, बिल्कुल ले रही हूँ दीदी। दीदी जी सादर प्रणाम, शुभ रात्रि दीदी जी। खुश रहिए, आनंद रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप मेरी लाइव में आए, आपका स्वागत है भैया मेरी लाइव सेशन में। लाइक डन कर भैया, लाइक डन कर दो अजय भैया, लाइक डन कर दो, लाइव में आए हो तो भैया। नहीं भैया अभी नहीं हुआ है, होने जा रहा है, इसीलिए तो म्यूट कर दी हूँ। ओम नमः शिवाय दीदी जी, ओम नमः शिवाय दीदी जी। शर्मा दीदी लाइक डन कर दो, शर्मा दीदी लाइक डन कर दो, अजय भैया लाइक डन कर दो। अभी खाना पीना नहीं हुआ भैया, दीदी जी खाना पीना होने जा रहा है।
दीदी आप जाना नहीं दीदी, मैं थोड़ा म्यूट कर रही हूँ, भोजन दे रही हूँ सबको। भोजन अभी तक
जय श्री राम शर्मा दीदी, जय श्री राम, जय श्री राम शर्मा दीदी, जय श्री राम ज्योति सिस्टर, जय श्री राम शर्मा दीदी, जय श्री राम।
अरे वो बारिश हो रही है ना बाहर, तो कमरे में हूँ इसीलिए म्यूट कर दी हूँ। चली गई क्या उमा? उमा चली गई क्या? कमेंट करो लाइव में हो कि नहीं। कमेंट करे तो पता चला। तुलसी दीदी सादर प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मेरी लाइव में आई। मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? लाइक डन कर दो दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। हाँ दीदी, लाइक हो गया। आप बहुत अच्छे अच्छे गीत डालती हो दीदी, मैं जाती हूँ आपके चैनल पर सुनती हूँ। एक कजरी गीत आप जो दादी नानी वाला गाई थी कल परसों में, वो वाला सुनकर मैं गाई भी हूँ अपने इस वाले चैनल पर। सुनी थी उस वाले पर, गाई थी इस वाले पर। Yeah.
खाना खा रहे हैं दीदी, सब लोग खाना खा रहे हैं। इसीलिए म्यूट कर दी हूँ दीदी, खाना खा रहे हैं सब लोग। हाँ दीदी, खटर पटर होता रहता है ना खाना वाना निकालने में, बनाने में, तो ये म्यूट कर देती हूँ। जब कोई आता है तो बीच बीच में बात करती रहती हूँ। भोजन ही कर रहे हैं उमा बहन, सब लोग भोजन कर रहे हैं। भोजन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे को आईसीयू से निकाले के अभी आईसीयू में ही है? लड़का गोदी में खिलाने को मिला कि नहीं अभी? बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा सिस्टर, दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी बहन।
राम राम दीदी जी, राम राम। ठीक है दीदी, ठीक 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 दीदी। मनीषा सिस्टर आप चली गई क्या? आपका कमेंट नहीं आ रहा है। अगर लाइव में हो तो कमेंट करिए मनीषा सिस्टर। ठीक है दीदी, मोबाइल ऑन करके रख दीजिए आप, कमेंट का कोई इशू नहीं है।
हाँ बिट्टी, म्यूट करके रखी हूँ, म्यूट करके रखी हूँ बिट्टी। राम राम उमा जी, राम राम उमा जी, राम राम उमा जी, राम राम। राधे राधे उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी लाइव में आई। तिवारी बनाई थी।
थैंक यू तुलसी दीदी दीदी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी लाइव में आने के लिए। दिल से धन्यवाद दीदी जी, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ दीदी। शुभ रात्रि दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी। राधे राधे उमा जी, राधे राधे, राधे राधे उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमा बहन। दीदी जी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी इमोजी के साथ दीदी जी बनी हुई हैं। राम राम तुलसी दीदी, राम राम उमा जी, राधे राधे तुलसी दीदी, राम राम। ठीक है उमा जी।
कितने रखी हो? तो मैं मैसेज ना डिलीट किया करो, मैं समझ गई थी पहले ही। मुंह से बोलने में गलत टाइप हो जाती है, डिलीट मत किया करो बहन। मैं समझ ली थी तुम्हारा मैसेज पहले ही। राधे 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 राधे। कितने की हो, एक की दो? एक दो तीन कितने रखी हो चलाकर? वो कमेंट करके बताओ।
ठीक है दीदी जी, ठीक ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। शुभ रात्रि दीदी जी। मैं 8 बजे आती हूँ दीदी। मैं रोज शाम को 8 बजे आती हूँ। आप तो तीसरे दिन आती है दीदी, मैं भूल जाती हूँ इसी वजह से।
धन्यवाद मनीषा सिस्टर। इससे भी लाइक डन कर दो मेरी प्यारी बहन। धन्यवाद धन्यवाद मनीषा सिस्टर। इस वाले से भी कर दो लाइक डन। मनीषा सिस्टर इस वाले से भी लाइक डन कर दो। उस टाइम आप उस वाली आईडी से आई थी ना, अपनी मानसी वाले से कि इसी से आई थी? उस टाइम शायद मानसी वाले से थी, अभी इस वाले से मनीषा वाले से हो। हाँ हो गया मेरी प्यारी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरी बहन। हाँ मेरे दिमाग में वही था कि उस टाइम दूसरे से थी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। खाना पीना खा ली कि नहीं अभी? ये सही है जी, मेरी लाइफ चल रही है। मैं लाइफ और एक तो रनिंग देने आई थी आपको भी जी। यदि लाइफ से भी कुछ प्यार मिलता है, लाइफ से भी तो एक लाइफ और एक दो रनिंग आपको देने आई थी। ये ना कहना कि जब समझ नहीं था तो क्या करने आई थी। भैया मेरी लाइफ चल रही है, अब मैं जा रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। चलो हो गया, अब सोने जा रही हो बहन? बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपको याद था कि मेरी लाइव चल रही है, आप मेरा सपोर्ट करने आई, मैं बहुत खुश हो गई इसी बात से। भैया 8 बजे से लाइव ऑन करके रख देती हूँ मॉर्निंग तक। जितना आगे से जोड़ती हूँ भैया उतना पीछे से कट जाता है। इसी वजह से परेशान हो गई है। भैया मैं पहले 11 बजे करती थी, इस टाइम नहीं कर रही हूँ। कल और आज 2 दिन की थी, आज तो कोई आया ही नहीं। एक भैया अकेले आए थे बस। आज 11 बजे 1 घंटे चला कर रखी थी तो आधे घंटे की वापसी मिल गई है।
यार मैं जा रही हूँ, समय नहीं है, मजबूर हूँ भैया, मेरी मजबूरी को समझना। समय होता तो मैं जरूर देखती भैया, मैं खुद भी विवश हूँ। विवश हूँ। विवश हूँ। भैया दिन भर दूसरे की लाइफ में चक्कर काटती हूँ, और अगर अपनी लाइफ लेकर बैठी होंगी तो वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी भैया। इसी वजह से रात में 8 बजे से पूरी रात ऑन करके रख देती हूँ। वीडियो बनाना भी तो जरूरी होता है ना भैया। और फिर वीडियो पर जाकर एक डेढ़ मिनट की वॉच करती हूँ भैया। थैंक यू मेरे प्यारे भैया, कल फिर मिलूंगी एक लाइफ के साथ। और 2 से सब्सक्राइब की हूँ भैया, लेकिन दोनों आईडी उसी मोबाइल में लगी हैं, और भी और पेमेंट की बाकी दोनों इसी मोबाइल में है। तो एक ही लाइक दे पाऊंगी भैया।
खुश रहो मेरी प्यारी बहन। सदा सुहागन रहो। 35 लाइक डन कर दी हूँ मेरी प्यारी बहन।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बहन। संतरा बहन दिल से धन्यवाद।